अनसैचुरेशन बोलते हो। ये जो बॉन्ड दिख रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज अनसैचुरेशन, राइट। उसके वजह से आपका पॉलीमर का प्रॉपर्टी चेंज होता है, राइट। तो इसलिए देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसके वजह से आपका पॉलीमर का प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, राइट। वन इज, इफ इट इज ए होमोपॉलीमर देन इट इज फाइन, बेस्ड ऑन द क्रिस्टलिनिटी आपका प्रॉपर्टी चेंज होता है। अगर को होमोपॉलीमर नहीं है, अगर other than homopolymers there are unsaturations also, on the basis of that also your property going to get changed, right। अगेन ऑल्सो हमने कॉन्जुगेशन की बात की थी। कॉन्जुगेशन मतलब ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता रहता है, कभी इधर है कभी इस तरफ ए साइड पे शिफ्ट होता है। तो ये सब बॉन्ड को जो बोलते हैं, इट इज मोस्टली दोज हु आर फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड दे कैन अंडरस्टैंड, राइट। कॉन्जुगेशन क्या होता है, शिफ्टिंग आउट ऑफ पाई बॉन्ड्स, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, राइट। सो इफ सो दीज आर द केमिकल स्ट्रक्चर। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको ये से याद रखना है कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर दैट ये सब प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। सो यू, तो ये जो पॉलीमर है वो बहुत ही व्हाट यू कैन से, टेक्निकली अगर जाओगे तो शायद बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप पोटेंशियल यही समझ के चलो कि ये जो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जो मैंने इधर लिखा है, लाइक होमोपॉलीमर, अनसैचुरेशन, कॉन्जुगेशन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है आपको रिंग जैसा दिखता है, राइट। तो दीज आर द रिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। उससे भी आपका पॉलीमर का प्रॉपर्टी चेंज होता है, राइट, दैट टीजी चेंज होता है, राइट। सो दीज आर द ऑल्सो, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जिससे आपका पॉलीमर का प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, राइट। So everybody is attending, right? Now there are some students so that I can wait or hello. So Yes, everybody is sir. at, yeah. So if you are not understanding something, then you can ask. Free to ask in Hindi, English, whatever language. So don't feel shy. So if I whatever the simplest form, then I can describe you. Otherwise, if you remain like somewhat silent, so I did not get whether you are understanding or not, right? Because these are little bit technical than other things. Like this subject is a little bit technical, structure properties. So if you are not understanding anything, then you can easily ask me. So previous lecture you have understood, right? आपको कैसे कैसे आप differentiate करते हो different polymer को based on the properties. Yes. Hello. So last class, actually, I was on leave. I have to go through these No, recordings. yeah, but last class, but whatever we have learned, or also the previous class, Mr. Yes, yes, Ajink yes. has taught some lecture, right? Yeah. There, have you understood anything regarding polymer, how it has been changing the properties and all? How, based on what property is getting changed? Yes, So, sir. Those topics are clear, actually. okay. Yeah. So, on the basis of that, right, when you are preparing a polymer, right, just understood the concept. When you are preparing a polymer, right, polymer are different, right? You are using different polymer, right? So it may be a engineering polymer, it may be a commodity polymer, right? If it's a commodity, then it is a polypropylene, polyethylene, and all that. If it is a engineering, then it is a polyamides, polyoxymethylene, then it can be a PET, right? These are engineering polymer. Or if it is a specialty polymer, then you will get a polyphenylene sulfone, polyether ketones, polyether ether ketones. ये सब अलग अलग टाइप्स के पॉलीमर है, राइट। Yeah. तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑल्सो आपका प्रॉपर्टी चेंज होता है पॉलीमर का, दैट्स माय होल पॉइंट, राइट। Okay. Mm. ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट आपका स्ट्रक्चर मतलब केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। इफ यू आर इन ऑन व्हिच बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, सो so if you are from technical background, then you understand little bit chemistry and all. So you can easily say that based on the structure, right? As you can say, most of the people who are not from technical, like not from science background, they will not. It is difficult for them to understand. But simply you understand that based on the properties, the structure of the polymer are get going to get changed, right? So what are the structures? The structure may be the a structure जिसमें आपका एक डबल बॉन्ड हो सकता है, राइट, प्रेजेंस ऑफ टू बॉन्ड्स।
उससे भी आपका प्रॉपर्टी वेरी होता है। और एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है, उससे भी आपका जो प्रॉपर्टीज है पॉलीमर का वो भी वेरी हो सकता है। एंड देयर आर स्ट्रक्चर जिसमें साइक्लिक रहता है, जैसे ये साइक्लिक रिंग्स हैं, तो उससे भी आपका पॉलीमर का प्रॉपर्टी वेरी हो सकता है। इट मे बी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और थर्मल प्रॉपर्टीज और मे बी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन पॉलीमर, राइट। So whether it is mechanical, thermal or chemical, so ये जो properties है based on the structure it is going to get changed, right? Yeah. Understood? Yes. Yes. When you talk about polymer, there are heteropolymers also. Heteropolymer means what? When mostly you know the polymer, the main chain are made from carbons, right? If you have a carbon and you have a oxygen, or a carbon or a nitrogen, right, in the main chain. So these polymer are known to be heteropolymers, right? So the polymer with different linkage like oxygen, nitrogen, sulfur linkage, silicon linkage. So these type of polymers were considered to be heteropolymers, right? इस सब से भी आपका जो पॉलीमर का क्या है प्रॉपर्टीज ना, जो होता है वो चेंज होता है, राइट। एज आई शोज यू सम प्रॉपर, आगे आगे जैसे आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, राइट। द होल सब्जेक्ट इज अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, सो आई एम गिविंग यू द सम आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर, राइट। So in when you going to correlate the structure with the properties of polymer, then you are going to understood why is it so, right? Why the tensile strength of one polymer like polyethylene terephthalate is higher than polyethylene, right? क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में ही उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ओके इसमें बल्कि रिंग्स है, ऐसे रिंग स्ट्रक्चर है, सो दैट आपका जो प्रॉपर्टी है उसका रिंग स्ट्रक्चर की वजह से एनहांस हो रहा है, राइट। वायरेज आपका जो पॉलीइथिलीन है उसमें आपको कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो लीनियर पॉलीमर है, इसलिए उसका प्रॉपर्टी रिलेटिवली कम है, राइट। वन सेकेंड, 1 सेकेंड। अरे वो सैंपल, हाँ तो वो ये तो कर, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई ठीक है, ठीक है, बाद में बात, हाँ। ओके, हाँ, ओके। सो हेट्रोपॉलीमर्स वो होते हैं जिसमें आपके मेन कार्बन के साथ डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं, उसको आप हेट्रोपॉलीमर्स बोलते हो, राइट। जैसे इधर कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन का भी लिंकेज है, तो ये हेट्रोपॉलीमर हो गया। तो हेट्रोपॉलीमर का मतलब है एक सिंगल मॉलिक्यूल्स जिसका मेन बैकबोन कार्बन से नहीं, कार्बन प्लस अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ रहता है, वो हेट्रोपॉलीमर से है। लेकिन अगर होमो टाइप पॉलीमर देखोगे तो दैट इज मोस्टली पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, जिसका जो मेन चेन है that is mostly made of only carbon, right? Understood? Yes, sir. Clear. Yeah. So here if you see it is mostly carbon, right? Carbon is attached. So your hydrogen is going to get stuck in this side chains, right? So that इसको homopolymer बोलते हैं, ये mostly carbon से बना हुआ रहता है, right? Even cyclic ring are also made from carbons, right? So वो homo type polymer है, whereas heterotype polymers में क्या होता है? There is carbon, also there with carbon there is other linkages also like oxygen, nitrogen, right? सो ये सब टाइप का जो पॉलीमर है उसको आप हेट्रोपॉलीमर्स बोलते हो, राइट। अंडरस्टूड? Yeah. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर्स। सो हेट्रोपॉलीमर में आपका पॉम पॉलीऑक्सीमिथिलीन जो है, पॉम मटेरियल आप यूज करते हो, पॉलीयूरेथीन यूज करते हो, पॉलीकार्बोनेट यूज करते हो, विच इज ए लिंकेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, उसको आप हेट्रोपॉलीमर बोलते हो, राइट। फिर जो नाइट्रोजन टाइप का हेट्रोपॉलीमर्स क्या है? अमाइंस, डिफरेंट अमाइंस, राइट। कार्बन के साथ डिफरेंट नाइट्रोजन का लिंकेज रहता है, तो वो जनरली अमाइंस में रहता है, एमाइड्स में रहता है। अमाइड्स मतलब पॉलीअमाइड, आपका नाइलॉन जो मटेरियल यूज करते हो आप, राइट। दीज आर हेट्रोटाइप पॉलीमर्स। वेयर सल्फर लिंकेज कौन सा है? जैसे आपका कोई भी सल्फर पॉलीमर लाइक पॉलीफिनिलीन सल्फोन्स, पीपीएस, पीपीएस का नाम सुना है, पॉलीफिनिलीन सल्फोन्स एंड ऑल। Have you heard of PPS? Anybody is working with PPS? No. So these are the different polymers which are mostly considered to be heteropolymers. Also silicons means silicon elastomer जो आप use करते हो, right? And these are also considered to be heteropolymers, right? Yeah.
Okay. So other than that, what are the other things that can be going to affect your properties? Like side chain, right? In homopolymer there are side chain groups, right? Side chain group मतलब आप क्या समझते हो? The group which are attached to your side chain, like जैसे पॉलीप्रोपिलीन है, तो प्रोपिलीन में आपका साइड चेन ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप से, राइट? और these side chains groups are considered to be affecting the properties of your polymer, right? How it is going to affect, then we'll discuss, right? So if you are going for polystyrene, then these are the side chain group. The styrene is the side chain group of polystyrene, right? This is also going to affect your polymer properties, right? So when which property it is going to get affect, that as I discussed it earlier, जैसे जैसे आपका साइड चेन ग्रुप्स रहता है या बल्कि ग्रुप्स रहता है, तो आपका जो टीजी है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, राइट, वो आपका बढ़ते जाता है, राइट, इंक्रीज होता है। वेयरएज आपका जो एमरफोस नेचर है पॉलीमर का, या आप बोलते हो कि आप पॉलीमर आपका ट्रांसपेरेंट बन रहा है, दैट मीन्स आपका उसमें क्रिस्टल कम बन रहे हैं, राइट? सो जो एमरफोस नेचर है वो भी आपके साइड चेन ग्रुप्स के वजह से ही इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट मतलब उसमें ही अगर आपके पॉलीमर में साइड चेन ग्रुप रहा तो एमरफोस नेचर ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, दैट मीन्स आपका मटेरियल में ज़्यादा क्लैरिटी आता है, राइट? तो दीज आर द पॉली डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, आपका पॉलीमर का प्रॉपर्टीज चेंज होता है, राइट? ये मेरा तो होल कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर पॉलीमर का आप स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे, दैट मीन्स अगर आप सिमिलरली देखोगे पॉलीप्रोपिलीन जिसमें एक छोटा साइड चेन ग्रुप है, तो उस केस में क्या होता है, आपका polypropylene is considered to be opaque or translucent, right? Whereas polystyrene is considered to be transparent, right? You're understanding, Yes. right? So due to this changing of side chain group, also the properties of your polymer is going to get changed. Also there are branching. What is branching? What do you mean by branching? द जनरल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचिंग? लाइक ब्रांच मतलब आप क्या समझते हो, जो एक मेन सेगमेंट रहता है उससे जो अदर दूसरे छोटे छोटे सेगमेंट्स ग्रो होते हैं, राइट? जैसे ये आप देखो, ये मेन सेगमेंट है, आप देख रहे हो ये मेन सेगमेंट कैसा है, राइट? उससे जैसे जैसे बड़े बड़े सेगमेंट ग्रो हो रहे हैं, राइट, तो वो उसको आप ब्रांच बोलते हो। ये ब्रांच आइदर ये शॉर्ट ब्रांच भी हो सकता है या लॉन्ग ब्रांच भी हो सकता है, राइट? right, depending upon branching, whether it is a short branch or a long branch, or the number of branching is more or less, उससे भी आपका पॉलीमर का प्रॉपर्टीज चेंज होता है, राइट? सो द टिपिकल एग्जांपल इफ यू से ऑफ ब्रांचिंग, आप एचडीपी पता है, राइट? व्हाट इज एचडीपी? व्हाट इज एचडीपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीपी? High density polyethylene. हाई डेंसिटी पॉलीथीन। व्हाट इज एलडीपी? Low density. Low density, and LLDP is linear low density polyethylene, right? These are the three types of polyethylene that we generally used, right? HDP is considered to be the most linear material, or yeah, most linear polymers, whereas LDP is considered to be the branched one with a short branch and more number of branching, whereas LLDP is to be considered to be branch polymer with lesser branching, right? Right. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, लेस नंबर ऑफ ब्रांचिंग, और या विदाउट एनी ब्रांचिंग, तो ये इससे क्या होता है ना, प्रॉपर्टी चेंज होता है, राइट? अगर लेस ब्रांच है आपका तो थोड़ा बहुत आपका मेल्टिंग टेम्परेचर का इंप्रूवमेंट ज्यादा होता है। जैसे आपका एचडीपी है, तो एचडीपी का मेल्टिंग टेम्परेचर इज अराउंड व्हाट 140 डिग्री सेल्सियस, राइट? whereas LLDP का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है इट इज अराउंड 120, whereas LDP का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ब्रांचिंग इट इज अराउंड 108 टू 115 डिग्री सेल्सियस। तो ब्रांचिंग के वजह से ही अगर ज़्यादा ब्रांचिंग हुआ तो आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है या मेल्टिंग पॉइंट है वो भी रिड्यूस होता है, राइट? दैट मीन्स आपका मेटल जो मटेरियल है वो लो टेम्परेचर में मेल्ट होता है, राइट? तो एज आई सेड यू अर्लियर, मेल्टिंग टेम्परेचर, प्रोसेसिंग टेम्परेचर, ये दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। वेयर मेल्टिंग टेम्परेचर में आप जनरली क्या करते हो, आप पॉलीमर को देखते हो कि पॉलीमर का जो क्रिस्टल्स है वो मेल्ट हो जाते हैं, राइट? वायरस इन प्रोसेसिंग टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, आपका मटेरियल जो है वो फ्लो होने की कंडीशन पे आ जाता है, राइट? अंडरस्टूड? Yeah. Okay. So these are the concept of branching, right? Again, it is also the same like
branching with heteropolymers means heterotype branching means there are different groups that is been attached to your polymer backbones, right? So then ऑक्सीजन का जो रहता है, then ऑक्सीजन का कहाँ पे ग्रुप आपको आपको आइडर यू आर गेटिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप्स, राइट? पीबीओस में पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड पीबीए, दीज आर ऑक्सीजन टाइप ऑफ ब्रांचिंग, राइट? मतलब जिसमें आपका ऑक्सीजन का लिंकेज है, राइट? सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में आप पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल्स, राइट, जिसमें आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो ये, हैव यू सीन दिस? कैन यू सी माय क्रॉसर? दिख रहा है आपको? Yes, sir. I हेलो, can see the cursor. It's आपको ये रेड डॉट दिख रहा है, द मार्कर? कैन यू सी Yes. दैट? ओके, सो दीज आर, सॉरी, okay, so these are the nitrogen compound which is attached to your main polymer chain, so these are called as polyacrylonitrile, right? Similarly there are polyacryloamides also, ये जो structure है amides का structure है, so it is known as polyacryloamide. whereas oxygen का जितना भी आपने देखा like esters, right, PMMA, right, then sorry this is PMMA and PBOH, ये PBOH है, PMMA ये ईस्टर्स है, राइट? तो ये जो सब स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से क्या डिफाइन करते हो कि आपका प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर कैसा है? तो होल पॉइंट इज दैट आइदर यू आर गोइंग फॉर ए होमोपॉलीमर or a heteropolymers, right? Again also in homopolymer, what are the types like branching, branched or non branched, right? अगर हेट्रोपोलीमर जा रहे हो तो हेट्रोपोलीमर में क्या क्या लिंकेज है, वेदर इट इज ए लिंकेज ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके ऊपर भी आपका प्रॉपर्टीज चेंज होता है, या क्लोरीन का लिंकेज, राइट? हैव यू वर्कड विद पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड? these are the common polymer that I am asking. Have anybody worked with PVC? Yes, sir. So what you observe from PVC, like what, अगर आप पॉलीथिलीन पे भी काम करते हो और पीवीसी में काम करते हो तो क्या डिफरेंस है उसमें? PVC is a little brittle PVC is little brittle, right? Why is it so? Why is it so? Have you asked why is it so brittle as compared to polyethylene? because it has chlorine. Yeah, exactly. So my point is exactly the same. If you it is a any halogen atom, chlorine. In the case of PVC, it is chlorine. In the case of PTFE, like polytetrafluoroethylene, it is fluorine atom, but the number of fluorine atoms are more, right? That's why it is considered to be more soft. Also, if you take in the terms of processing of both the polymer like PVC and PTFE, it is very difficult to process it. You cannot process this type of polymer in by applying conventional technique, right? उसके लिए आपको certain additive भी add करना पड़ता है. Generally, when you talk about PVC, without any additive package, you cannot process PVC, right? पीवीसी के लिए आपको डिफरेंट एडिटिव पैकेज ऐड करना पड़ता है, लाइक स्टेबलाइजर्स, राइट? अगर आपको रिजिड पीवीसी बनाना है देन यू हैव टू ऐड हीट स्टेबलाइजर, देन यू हैव टू ऐड सम इंटरनल लुब्रिकेंट, देन यू हैव टू ऐड सम प्रोसेसिंग एड टू प्रोड्यूस रिजिड पीवीसी. सिमिलरली अगर आपको फ्लेक्सिबल पीवीसी बनाना है देन यू हैव टू ऐड हीट स्टेबलाइजर, प्लास्टिसाइजर्स, राइट? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट पीवीसी को आप प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हो बट यूजिंग different additives. But when you talk about polypropylene or polyethylenes, which is the simplest of polymer, where you can process this type of polymer by simple, like simply melting, right? It will not degrade. So due to the presence of chlorine and fluorine like PVC, PVDC, right, PVDF, ये जो polymer है जिसमें आपका mostly halogen type of atoms है, right, साइड चेन में, तो उसमें उससे भी आपका पॉलीमर का जो प्रॉपर्टीज है वो एंड अल्टर होता है, या बिहेवियर है, जो प्रोसेसिंग बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज है, ये सब अल्टर होता है, राइट? वरएज अगर आप पीटीएफई देखोगे तो पीटीएफई में देयर आर नंबर 4 नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स आर देयर, राइट, हर मोनोमरिक यूनिट में. तो जैसे जैसे आपका ये जो हेलोजन एटम कोई भी पॉलीमर चेन में बढ़ता जाता है तो आपका पॉलीमर का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ना बहुत वीक करता है, और तो फिर इसके वजह से ना आपको इलास्टिसिटी आता है. तो इसलिए आप जब देखोगे पीटीएफई का जो आपका टैप है जो आप मोस्टली यूज करते हो, तो उसका उसका आप देखोगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट और मालेबल टाइप ऑफ मटेरियल है, राइट? आप उसको स्ट्रेच करके आप बांध सकते हो,
राइट, उसका स्ट्रेंथ इतना नहीं आएगा एज कम्पेयर टू पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन, राइट। हैव यू ऑब्जर्व दैट पीटीएपी का आप टेप यूज करते रहोगे ना, टेफ्लॉन टेप जिसको हम बोलते हैं मोस्टली, राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। Yes, sir. तो पीटीएफई का टेप आप लोगों ने सबने यूज किया रहेगा, राइट, टेफ्लॉन टेप्स। होप सो कि आपका कोई इंडस्ट्रियल यूज में जो व्हाइट कलर का टेप यूज करते हो जिसको आप टेफ्लॉन टेप बोलते हो, टेफ्लॉन टेप, तो वो मोस्टली मेड ऑफ पीटीएफई, राइट। तो ये व्हाई इज सो, व्हाई आई एम सेइंग दिस सो इज दैट कि आपका जैसे जैसे पॉलीमर का स्ट्रक्चर चेंज होता है, राइट, आई हैव सीन यू मेनी स्ट्रक्चर, राइट, उसके बेसिस पे आपका क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज जो है पॉलीमर का वो चेंज होता है, राइट। सो that's why it is very important to understand the structure of your polymer. From that structure you will define what properties it is going to show when we are going to use it for that at a particular application, right। जो पॉलीमर का जो प्रॉपर्टी ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, डिराइव कैसे होता है, तो वो स्ट्रक्चर से डिराइव होता है, राइट। स्ट्रक्चर में आपको पहले if you not understanding like deep into, if you are not going deep into chemistry, but you can also understand, okay, so this is the structure, this is due to the presence of fluorine, chlorine and all whatever, and due to presence of whatever the functional group, right। So my polymer is going to behave different, right, while I am processing or while I am using for end user applications, right। Yeah. Uh, Yes. okay. So again, let's come to the terms like cross-linking. What do you mean by cross-linking? Have you heard of the term cross-linking? Somebody working in rubber and all. No, sir, I never Sorry, on plastic and rubber. sorry, your voice is not coming right. It's breaking, right? Uh, Yes, sir, I never worked in rubber or plastic. I don't know actually. so you have not worked any type of plastics and rubber. Now you have worked with different plastics or what you are saying? I don't know. Uh, so you told me that you have never worked with rubber, right? Okay. So rubber is something uh, what you where is the application, can you tell me what is the application of rubber that you are seeing daily, right? The most common thing that you can see is a tire application, right, Yes, tires and bump dampers in industry machines. or dampers, yeah, Yeah. damping pads. Yes, Okay, correct. Stepping pads and bushes sometimes use rubbers. okay, so have you figured the processing of rubber is something very different when you compare to processing of polymer, right? So the processing of rubbers, what happens? So mostly rubber is taken and mixed with different types of additives, right? So sometimes you do cold mixing, sometimes do hot mixing, right? And that like that. So in generally we do cold mixing of rubber with cold mixing meal, right? Cold meal. Then so if you want to cross link that rubber, right? So you generally use what, right, we use generally the most common thing that we are going to use for rubber cross linking is sulfur, right? Also we can also cross link the rubber by peroxide also, amines also, right। so ionic cross linking भी कर सकते हो आप, जिंक के साथ भी, जिंक ऑक्साइड के साथ भी आप क्रॉस लिंक कर सकते हो। सो दीज आर द फॉर्म ऑफ रबर दैट यू कैन क्रॉस लिंक, राइट। आप एक पर्टिकुलर रबर लोगे तो आपके पास डिफरेंट क्रॉस लिंकिंग कैपेबिलिटीज है। तो व्हाट इज क्रॉस लिंकिंग? व्हेन यू आर जॉइनिंग एनी चेन, राइट। अगर एक लीनियर चेन है जिसको आप एक एंड और दूसरे एंड का एक चेन को आप ऐसे ज्वाइन करते हो, कैन यू सी माई रेड क्रॉस रेड पॉइंटर्स? आप Yeah. देख सकते हो, या सो हियर व्हाट यू जनरली वर जॉइनिंग टू पॉलीमर चेन थ्रू ए केमिकल बॉन्ड, राइट। तो हम ऐसा एक एजेंट डालते हैं जिससे दो एटम्स को ना वो केमिकली ज्वाइन करता है, राइट। so that particular thing is known as cross linking. That can be done through various methods, through peroxides. Peroxide is nothing but as you can see here ROR जो लिखा है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है जो कि ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर रेडिकल जनरेट होते हैं, then that particular radical is going to join your two polymer chains, right, from abstracting one carbon atom, you are one hydrogen atom, secondary hydrogen atom from a carbon,
राइट। सिमिलरली अगर आपका सल्फर है तो सल्फर का भी क्रॉस लिंकिंग वैसे ही होता है, 2 पॉइंट से आप सल्फर का लिंकेज क्रिएट होता है, एज यू कैन सी हियर इज द सल्फर लिंकेज एंड हियर इज द सल्फर लिंकेज, राइट। सो इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस लिंकिंग है, राइट। ये जो 4 टाइप्स के लिखा है, दीज आर द कंपाउंड व्हिच आर यूज्ड टू क्रॉस लिंक द रबर, राइट। तो व्हाई रिक्वायर्ड a cross linked rubber? Why is it so? Can you give me some idea why you required a cross linked rubber? So to make it soft, Sorry. to make the material property like soft and elastic. No, so rubber has already a soft and elastic material, right? Hmm. So it does not have a good strength, Yeah. and it does not have a good chemical resistance, right? So it And is so it is adding strength to them. yeah, cross-linking what is done, what it is going to add strength to the rubber, whereas you are also, while cross-linking, you are adding some carbon blacks and all, right? So Hmm. that carbon black is going to improve the UV weathering properties, right? Weathering properties and chemical properties and mechanical can be imparted through क्रॉस लिंकिंग एंड यूवी प्रॉपर्टीज। जो आप टायर यूज करते हो तो टायर तो आउटडोर एप्लीकेशन में रहता है ना, राइट। आप गाड़ी रखते हो तो उसमें बारिश, ठंड सब गिरता है, राइट, गर्मी। तो वो एक साइक्लिक एप्लीकेशन में हो गया, तो इसलिए उसका यूवी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने के लिए क्रॉस लिंकिंग भी काम में आता है, बट एडिशनल ऑल्सो यू आर एडिंग सम कार्बन, राइट। आपको जो क्या होता है, दो कार्बन ब्लॉक जो होता है, तो वो उसका काम ही वही है, फंक्शनल एडिटिव है, वो वेदरिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, राइट, कोई भी मटेरियल में। ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑल्सो इट इज गोइंग टू शो ए गुड weathering properties, right? So that's why you generally do क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग में आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज एनहांस होता है, एंड ऑल्सो आपका यूवी प्रॉपर्टीज भी एनहांस होता है, और ऑल्सो यू आर एडिशनली एडिंग some of the carbons, right, to improve its property. Okay, Hmm. understood? Yeah. Okay, so also this is the concept of flexibility. So what is you understood by flexibility? What do you understood by flexibility? What is flexibility? Something, can you explain me? So you can see this image, right? These are flexible material. If you have a cap, then where you have a hinge where you can completely shut up and shut open or close the cap, right? The hinge is considered to be flexible, right? Where you have a wires, like जैसे आपका black wires रहता है and all, so this is considered to be a flexible material, जो आप जिसको आप ट्विस्ट एंड टर्न्स कर सकते हो, राइट। कोई भी चीज दैट यू कैन डू ए ट्विस्ट एंड टर्न, राइट, दैट मटेरियल इज कंसिडर्ड टू बी फ्लेक्सिबल, राइट। Yeah. सो अगर आप ट्विस्ट एंड टर्न करते हो विदाउट ब्रेकिंग इट्स ओरिजिनल शेप, सो दैट थिंग इज कंसिडर्ड टू बी फ्लेक्सिबल, राइट, राइट। So these are known as flexibility. So what is flexibility, when why you require flexibility in the material? Split is to avoid damage and also Sorry. if it is flexible, the material will not break actually. Okay. Yeah, and also if it's flexible, the wherever we use it as a fitting or damping or whatever things, so Okay. it will have some flexibility to adopt with that material whichever we are attaching to this. ओके, सो व्हेन योर मटेरियल गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल, कब जाके आपको फ्लेक्सिबल होगा आपका मटेरियल? व्हेन इट इज गोइंग टू शो यू सम फ्लेक्सिबिलिटी? सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एनी, let us consider the example of rubber, right? Rubber is in a room temperature, is it flexible or not? It is flexible, right? कोई भी रबर है वो रूम टेम्परेचर में फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, राइट? तो लेकिन there are something like when you consider about some plastics, right? Whether the plastics are flexible at a room temperature, yes or no? Yes. I'm not talking about all the plastics. When I talk about plastics, you can see very thin wall container, then you are telling that it is flexible, ठीक है। Hmm. whether you are to consider पेट बोटल्स, तो वो बहुत ही थिन वॉल पार्ट हो गया, राइट। थिन हो जाता है तो पॉलीमर वैसे भी उसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, राइट। Yeah. अगर if you are going to increase the thickness, then flexibility again also going to get reduced,
right? The whole concept is when your polymer is above its melt Tg, as I earlier understood described what is Tg, right? Below which your material is going to get rigid, and above which temperature range above which your material is going to get flexible, right? Right. So above Tg, the mostly the polymers are considered to be flexible, right? The Yeah. polymer chains are mostly considered to be flexible above which Tg. So the rubber Tg is in negative, right? So it is minus 60, minus 70, minus 50 like that. So below that your rubber is going to get hardened, right? And why it is so that the Tg of rubber is much less is that rubber is a completely high molecular weight amorphous material, right? So when you consider about rubber, rubber is already a amorphous material that is a higher molecular weight. So if it is a higher molecular weight amorphous material, so you do not have any crystal arrangement or structural arrangement or the arrangement of polymer chains. अभी ये दिख रहा है, so this is a pattern, right? Here is you can see the pattern, right? Yeah. Here also you can see the pattern, right? अगर वो कोई चीज डिसअलाइंड रहा या कोई चीज एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं रहा तो उसको हम एमोर्फस बोलते हैं, राइट? अगर कोई चीज अलाइंड रहा तो हम उसको जनरली क्रिस्टलाइन बोलते हैं, राइट? दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एमोर्फस एंड क्रिस्टलिनिटी, राइट? Yeah. यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes. ओके. सो इफ समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दे आर फ्री टू आस्क, राइट? सो एक चीज जो एक पैटर्न में अरेंज होता है तो आप उसको क्रिस्टलाइन बोलते हो, वेयर इज अगर डिसओरिएंटेडली अरेंज है वो चीज देन इट इज नोन टू बी amorphous, right? So this type of behavior of polymers, right? How it comes because the molecular weight of rubber is so high that so it cannot arrange in a this systematic manner, so that's why it is considered to be amorphous material. Similarly, again also I told you, if it is a bulky group is present in the polymer chain, that is considered to be amorphous because the presence of bulky group, the chains are not orderly arranged. If it is a bulky side chain group, right? If it is a more number of what you can say branching is improved, then also the polymer is going to get amorphous in nature, right? So these are the factors where your polymer amorphous nature of your polymer is going to get impact on your polymers based on the its based on its based on its chemical structure, right? Chemical structure also and chemical based on its arrangement also, कि कैसे आपका पॉलीमर चेंज होता है, राइट? बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर व्हाट यू कैन से amorphous नेचर और क्रिस्टल नेचर, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओके इसमें साइड चेन ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर टू बी amorphous. और ये बहुत ही ज़्यादा हायर मॉलिकुलर वेट है तो आप इसको जब ठंडा करते हो तो वो अरेंज नहीं हो पाते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो दैट आपका amorphous नेचर बढ़ जाता है, राइट? ऑल्सो अगर सिमिलरली अगर कोई पॉलीमर है जो सेमी क्रिस्टलाइन है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर एक लीनियर पॉलीमर है व्हिच इज मोस्ट सेमी क्रिस्टलाइन, राइट? दैट मीन्स अगर आपका जितना क्रिस्टलिनिटी जितना आपका अरेंजमेंट बढ़ेगा, लाइक चेन्स का अरेंजमेंट जितना अच्छा बनेगा तो आपका पॉलीमर का क्रिस्टलिनिटी उतना इंप्रूव होते होते जाएगा, राइट? सो हाउ आई एम सेइंग सो इज एमोर्फस नेचर जो होता है वो ऐसे फैक्टर से इम्पैक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर भी जब जाते हो, राइट? दैट इज नोन टू बी ए टीजी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो आपका पॉलीमर अगर कंप्लीटली अमरफस है, राइट? सो वो बेटर बिहेव करता है, बेटर मतलब वाइब्रेट करता है, जो आपके उसके आप ये धागे जैसे थ्रेड्स जैसे ये देख सकते हो, राइट? हैव यू सीन दिस? आपको ये दिख रहा है, ये ऑरेंज है, राइट? कैन यू सी दिस? Yes, sir. फ्रॉम देयर यू विल गेट लाइक दिस. अगर टीजी के ऊपर गया तो आपको ऐसे थोड़ा डिसअलाइनमेंट होना चालू होता है, सो दैट यू आर गेट में मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द पॉलीमर, राइट? तो उसको जो डिसअलाइनमेंट होता है तो उसके वजह से क्या होता है, आपके जो पॉलीमर है वो चेन खुल जाते हैं, राइट? हैव यू सीन स्पैगेटी? स्पैगेटी आपने देखा है जो नूडल्स खाते हो आप? Yeah. तो नूडल्स को एक टेम्परेचर में बॉईल करते हो तो वो कैसे खुलता है? आप अब नूडल्स का अरेंजमेंट देखो सॉलिड स्टेट में कैसा है, थोड़ा सा हीट होता है तो फिर धीरे धीरे खुलता है, राइट? फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो पूरा
खुल जाता है सब चेन, मतलब नूडल्स पूरा सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, राइट। मतलब स्ट्रेट इन द सेंस नॉट दैट स्ट्रेट, आपको मतलब एक दूसरे से हट जाते हैं, राइट, एक बॉईल करने के बाद। तो वो आप इमेजिन करके चलो, तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर ऐसा है, थोड़ा सा आप टेम्परेचर देते हो तो पूरी ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर खुलता है, राइट। फर्दर व्हेन यू प्रोवाइड मोर टेम्परेचर एट मेल्टिंग, सो इट विल बी मोरली डिसअलाइंड, मतलब पूरा वो खुल जाता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ए चेन फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पॉलीमर में, वैसे वैसे आपका चेन जो है वो मोबिलाइज्ड होते जाएगा, मतलब एक दूसरे से खुलते जाएंगे, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चेन फ्लेक्सिबिलिटी। अंडरस्टूड व्हाट इज चेन फ्लेक्सिबिलिटी, Yes. Yes, sir. राइट। पॉलीमर के चेन्स हैं जो कि अरेंज्ड है, आपने उसको टेम्परेचर दिया, इट विल लिटिल बिट उसका एक्सपेंशन हुआ, देन यू गेट ए समवॉट इंक्रीज इन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको आप फ्री वॉल्यूम बोलते हो, राइट। देन फर्दर जब फिर और टेम्परेचर देते हो, तो और पॉलीमर क्या होता है, वो और एक्सपांड होता जाता है, राइट। मतलब और खुलते जाता है, और चेन और एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चेन फ्लेक्सिबिलिटी। कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका चेन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होते होते जाएगा, राइट। अंडरस्टूड। Yes, sir. I have one doubt. So, what is this pre-volume and total volume? Okay, so free volume is something. So when you consider free volume, so it is the volume between the polymer chains, right? Hmm. So if it is a closely packed, then that means uh, the polymer has a lesser free volume, right? अगर closely packed है, Hmm. जैसे Yeah. जैसे आपका पॉलीमर एक्सपांड होते जाता है, देन यू विल गेट ए मोर फ्री वॉल्यूम, राइट। टोटल वॉल्यूम मीन्स टोटल वॉल्यूम, राइट। अगर क्रिस्टलाइन स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली लेस होगा। एक पॉलीमर जब एलाइन स्टेट में है, एलाइन मतलब एक डायरेक्शन में एलाइन है, तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा जब डिसअलाइन में स्टेट में रहता है उससे, राइट। डिसअलाइन Hmm. होगा तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाए, ज्यादा होगा, तो दैट इज नथिंग बट टोटल वॉल्यूम, राइट। Okay. तो Hmm. टोटली कितना वॉल्यूम, जैसे आपका स्पैगेटी है, तो एक स्पैगेटी का आपने ये लिया, तो उसमें सॉलिड स्टेट में उसका वॉल्यूम कम है, आप जब Hmm. उसको हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है, दैट इज द टोटल वॉल्यूम, राइट। फ्री वॉल्यूम क्या है ना, अगर दोनों चेन है, वी आर एज्यूमिंग एंड सो वट एवर द साइंटिस्ट दे हैव एज्यूम्ड दैट पॉलीमर के चेन के बीच में एक वॉल्यूम रहता है, राइट। दैट इज नोन एज फ्री वॉल्यूम। दो जो चेन रहते हैं ना, उसके बीच का वॉल्यूम जो है, उसका आप जनरली फ्री वॉल्यूम जैसे डिफाइन करते हैं, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है। ऑब्वियसली फ्री वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका टोटल वॉल्यूम ऑल्सो गेट गोइंग टू गेट इंक्रीज, राइट। यू अंडरस्टूड। Yeah. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। टोटल वॉल्यूम माने ओवरऑल वॉल्यूम आपका कितना चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, और फ्री वॉल्यूम मतलब आपको चेन के बीच में कितना स्पेस क्रिएट हो रहा है, दैट इज कंसिडर टू बी द फ्री वॉल्यूम, राइट। Okay. सो so these are the uh, uh, what you can say, these are the structure, right, presence of the double and triple bond, based on that how much energy it is required to orient that particular polymer chain, right। तो उस हिसाब से उन्होंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, राइट। इफ इट इज ए इथिलीन मॉलिक्यूल, यू कैन इजीली सी दैट 9.6 किलो जूल पर मोल, दैट इज द एनर्जी, राइट। एनर्जी आपका जो यूनिट है, दैट इज हीट एनर्जी। सो आप ये डिफाइन करते हो कि किलो जूल पर मोल इज द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ओरिएंट दैट पॉलीमर स्ट्रक्चर, राइट। ओरिएंट मतलब वो वाइब्रेट करने के लिए उतना एनर्जी लगता है, राइट। यू अंडरस्टैंडिंग मी, राइट और नॉट? Yes, sir. हेलो। So similarly, that molecules, when you are removing this CH2 and adding CH double bond CH, means that means you are adding a double bond, right? Right. Here is a single bond. You know what is single bond, double bond? Have you understood till now? Where there is two, this type of line is there, then this is considered to be double bond. So if you go in more technical terms, you can say it is a sigma bond and it is a pi bond, right? तो पाई बॉन्ड हैज अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अपार्ट फर्दर, राइट। अगर आप उसको एक्टिवेट करना चाहो बाय यूजिंग पेरोक्साइड एंड ऑल, राइट। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी a double bond, right? So when you are using adding one more double bond to the polymer chain, also with a you are also getting a lesser energy, so that here is you are getting 9.6 is the this energy, and when you are adding double bond, it you are getting 8.4 kilojoule per mole, right, to orient that structure or
move the structure. When you are adding similar type of molecules with one substituent group, like substituent group means like here it is alkyl or methyl groups, right? तो इस केस में क्या होता है, if you can closely see, the energy requirement is going to get increased because of the substituent group. ये जो group होता है, it is going to restrict your polymer chain to move, right? here केस में आपका long chain है, तो आपका लीनियर चेन है, राइट? इधर आपका एनर्जी जितना आया, देन व्हेन यू आर एडिंग डबल बॉन्ड, सो योर एनर्जी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट? आप बोलोगे तो इधर भी डबल बॉन्ड है, बट इन दिस केस इट इज मोस्टली a alkyl group that is been present or substituent group that is been present, which also improves the energy requirement to freely move the polymer chain, right? So that's why these are the structural changes, right? Or these are the structural changes which cause the change in properties in any polymer, right? So that's why it is very important to understand what are the structure of a polymer, right? Every time when you see, we generally even also I am if I am also going to even sometimes what happens is when you are not technical, right? If let us consider I am non technical person, right? I do not know what is polymer, plastics and all, right? So what happens when generally somebody comes and asks me, okay, so this is also the granules and this is also a granules, and why is it so that this has a better flexibility or better properties as compared to this, right? Because if you if you are a person who knows the technicality, right, who knows the how to define them, okay, so this is sir, this is the elastomers and this is something that it is a octene butene rubber branching and something like that, it is a double bond and that, so that it required more energy and it is a lesser conformation means it requires more lesser energy to rotate and all. So that's why it is giving you a more flexibility, and it is mostly amorphous in nature due to presence of due to the presence of uh, uh, due to the uh, due to the absent of uh, like crystalline polymer or crystalline region, right? So that it is mostly amorphous, so that's why it is showing you the uh, uh, flexibility, right? But also sometimes what happens when you talk about amorphous polymer, right, every time it is not considered to be a flexible one, right? So when you talk about amorphous, when it is a linear polymer, right, completely linear polymer and amorphous in nature, that means uh, let us consider the rubber, right? It is a completely linear polymer which has a double bond and it is considered to be amorphous in nature. Where you consider a polystyrene, right? It is a linear polymer, but it is a substituent group like benzene ring. It is present in the side chain group, right? Where it is a linear polymer, but due to the presence of that particular benzene in the structure, which causes your material to be not where causes your material to be not flexible at a room temperature, okay? So due to the presence of one single atoms, a single ring, which causes the change in so much property, right? कि आप ऐसे नॉर्मली आप ये लेके चल रहे हो रबर का मटेरियल, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस and you see whether polystyrene is considered to be a brittle material, right, at a room temperature, right? We are considering polystyrene as a brittle material at a room temperature, right? So these are the changes when this uh, uh, this chemical nature of any material is going to get changed, और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटेरियल इज गोइंग टू गेट चेंज, सो आपका प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है, राइट? ऑल्सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे आपको नेचर और प्रॉपर्टीज ये सब चेंज होते मिलता है, राइट? सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग. तो आपका इथिलीन है तो ऐसा है, देन यू डिफरेंट इथिलीन विथ different chains of, then you are getting these are butadiens, right? And this is isoprene, I guess. So इसमें आपको ऐसे ऐसे एनर्जी लगता है to rotate the bonds, right? You are understanding my point or not? Yes. Yes. I think everybody is listening or somebody are not listening. I don't know. Every time you are giving answer. If you are not listening, if you are not understanding, then you can also ask me. Listening, sir. You are understanding? Yes. Okay, so I guess those who are from
any chemistry background they will understand. So otherwise, I think uh, somewhat if you go because it is subject is more related to little bit related to the chemistry and structure part, it is difficult to understand. But just listen, just try to understand these are the basic and concept of any polymer, right? Also, similarly, how flexibility is going to get changed the presence of these heteroatomics, right? Heteroatomics, as I told you earlier, ये जो हेटेरोएटॉमिक सब्सटेंस रहता है वो मोस्टली दो टाइप के लिंकेज रहता है, ऐसे कार्बन ऑक्सीजन का लिंकेज हो गया, कार्बन नाइट्रोजन का लिंकेज हो गया, राइट? देन सिलिकॉन ऑक्सीजन का लिंकेज हो गया, राइट? तो ये सब जो होता है ये हेटेरोएटॉमिक लिंकेज है, राइट? जिसपे क्या होता है, हेटेरोएटॉमिक का मतलब ये है कि दो अलग अलग एटम्स एक ही लिंकेज में रहे, एक ही चेन पे, मेन बैकबोन चेन पे रहे, तो उसको इसलिए हेटेरो बोलते हैं। होमो होता है कि अगर पूरा लिंकेज एक ही सिंगल एटम से बना हुआ हो, राइट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी होमो, राइट? हेटेरो तब बोलते हो अगर लिंकेज में दो अलग अलग टाइप्स के एटम्स हो, जैसे इधर कार्बन एंड ऑक्सीजन है, राइट, इधर कार्बन एंड नाइट्रोजन है, इधर सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन है, राइट? सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी हेटेरोएटॉमिक। अगर ये सेम चीज होमो रहता तो होमो का मतलब ये रहता है कि पूरा जो चेन है उसमें जो मेन बैकबोन है ऑफ दैट चेन इज मेड ऑफ कार्बन, राइट, और एनीथिंग एल्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम बेस भी पॉलीमर रहते हैं, तो वो भी उससे भी बन सकता है, राइट? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑल्सो द एनर्जी लेवल इज गोइंग टू गेट चेंज, राइट? तो उसके वजह से भी आपको रिजल्ट में वेरिएशन होता है, राइट? वेरिएशन मीन्स रिजल्ट में डिफरेंस दिखता है कि अलग अलग पॉलीमर का अलग अलग वैल्यूज है, राइट? हियर इज CONH2 मीन्स ये कौन सा लिंकेज है? कैन यू समबडी आस्क टेल मी व्हाट इज द लिंकेज ऑफ CH CONH? CONH को कौन सा लिंकेज बोलते हो आप? Amide. Yes, it's considered to be amide, right? Why what is this linkage known as? ये कौन सा लिंकेज है एंड व्हाट आर दिस लिंकेजेस? सिलिकॉन ऑक्सीजन, so these are the different linkages, right? If you are not if you are not acquainted with the chemistry then you will it's difficult to understand, but these are the linkages जिसका एक पर्टिकुलर नाम रहता है, राइट? तो वो linkages कैसे क्रिएट होते हैं, how it has been created, that is a different thing that you have already learned in polymerization, right? amide कैसे बनता है, esters कैसे बनता है, you have learned, right? You have learned how am I you are going to synthesize amide esters, right? What is this silicon? Sorry. So the first one is Easter linkage, right, sir? No, ester linkage is C double bond O. O. It is not ester. So first वाला क्या linkage बोलते हैं सर? पॉलीफिड आप क्या व्हाट आर द अदर लिंकेज? CH2 सिंगल बॉन्ड O आपको क्या लिंकेज लगता है, कौन सा हो सकता है? 1 second कॉल। हेलो, हेलो। Yes, sir. So these are the oxide linkage, right? Polyphenol oxide. Oxide. Okay, sir. And this is the silicon, right? Silicon oxygen linkage. What do you, right? So nothing. This is also the resonance stabilization, as I told you earlier. The shifting of bond, right? So how bond has been shifted, right? Either up, it can be the shifting of bond can be with a carbon atoms and all, right? Also the shifting of bond can be done through the shifting in the benzene ring, ये स्ट्रक्चर से भी आप स्टेबलाइजेशन हो सकता है या इससे भी हो सकता है, राइट? दिस इज नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, राइट? उससे आपका रीजनाइज स्टेबलाइज होता है, सिंपली कंसिडर टू बी द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, जिससे आपका
रीजनल जो है स्टेबलाइजेशन होता है। तो इसके वजह से भी आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकता है इन द पॉलीमर, राइट। सो दीज आर द कंसिडरेट ऑफ रीजनल स्टेबलाइजेशन, जिससे आपका क्या होता है कि आपका डिफरेंट ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है, देन दिस बॉन्ड हैज बीन शिफ्टेड टू दिस साइड एंड ऑल, राइट। और सिमिलरली इधर आप देखोगे तो इधर सिंगल बॉन्ड टाइप मॉलिक्यूल्स यानी इधर इधर जो देखोगे इधर अगेन ये शिफ्ट हो गया, देन इट इज इधर डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हुआ है, इधर डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, तो इधर भी डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। इससे क्या होता है आपका प्रॉपर्टी जो है पॉलीमर का वो चेंज होता है, तो उसका आप रीजनल स्टेबलाइजेशन बोल सकते हो, राइट। और पर्टिकुलर वे में आपका अगर ये याद रखना है कि लेमन टर्म में इफ इट इज अ साइक्लिक पॉलीमर, राइट, साइक्लिक पॉलीमर लाइक पॉलीफिनिलिन सल्फोन्स, जैसे फिनिलिन रिंग है, सल्फोन्स सल्फर लिंकेज है, राइट। so these polymer are considered to be more what why you are what is the concept of cyclic polymer? cyclic polymer क्या होता है मोस्टली polyfluorine sulfone polyethylamide, every can anyone tell me what is cyclic polymer? तो मोस्टली जो साइक्लिक पॉलीमर होता है जो मोस्टली वो कंसीडर टू बी इन द रेंज ऑफ स्पेशलिटी प्लास्टिक्स, राइट। जिसमें जो मोस्ट जो साइक्लिक पॉलीमर हो गया जैसे आपका पॉलीइथर ईथर कीटोन्स हो गए, पॉलीफिनिलिन सल्फोन्स हो गए, पॉलीइथर हो गए, तो ये सब लिंकेज जो साइक्लिक पॉलीमर रहते हैं तो उसमें क्या होता है आपका दे आर प्रिफरेबली यूज फॉर हायर एंड एप्लीकेशन, राइट। द मोर द टेम्परेचर, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो आप मोस्टली आप साइक्लिक रिंग का पॉलीमर जो है वो ज़्यादा यूज होता है, राइट, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर में भी स्टेबलाइज रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग साइक्लिक पॉलीमर इन द हायर टेम्परेचर एप्लीकेशन, राइट। जो भी आप हाई टेम्परेचर पॉलीमर देखोगे ना तो मोस्टली इट कंटेन some sulfur and oxygen linkage with cyclic ring. That's why it is known as cyclic polymer. So उसका sorry sorry okay, so these are the considered to be cyclic polymer जो होता है it is considered to be mechanically and thermally superior polymer as compared to the linear polymers, right. Right, mechanically and thermally it is considered to be the superior polymer. Yeah, property wise it is considered to be the most superior polymer as compared to linear polymers. So that's why we generally use cyclic polymer, right? Similarly, same thing is there, the ladder structure and all. So these are the structure, cyclic structure, जिसके वजह से भी आपका क्या होता है, you get a better enhancement in properties, right, as compared to linear polymer, right. When it is a linear polymer, the structure are very linear, like you are getting a polymer with a carbon, hydrogen, and like that. When it is a ladder structure, that means these polymers, these ring are stacked together, right, आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे stacked होके रहते हैं, so that is a more cyclic bulky rings which come together to impart strength and thermal uh, enhancement in thermal properties to the polymer, right. That's why आप cyclic ring का जो polymers है वो ज्यादातर आप यूज करते हो। so that again also this is the same, the ladder structure and all, these are the also called known to be a cyclic polymer, right। साइक्लिक मतलब जिसमें आपको ऐसे टाइप के कोई भी कुछ भी रिंग दिखेंगे, देन दिस रिंग आर कंसीडर टू बी a cyclic ring, right? Understood? Have you understood this? जी सर। Okay. So again, if it is a side stand structure, as I told you, so that flexibility going to get increased. Again, same thing has been repeated here, right? If it is a long cyclic structure, long chain molecule in side chain molecule, so your chain flexibility is going to get increased, right? अगर शॉर्ट चेन होगा तो थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल होगा, अगर लॉन्ग चेन होगा तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, राइट। Also it depends on the size and shape of that, whether it is a if it is a linear long chain, then it is good. If it is a linear no, like bulky ring that is been present in the polymer, then the flexibility is going to get reduced, right। अगर आपको कहीं पे भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, मतलब कोई भी पॉलीमर जिसको आप मार के दिखो और उसमें आपको ऐसे रिंग टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिनिलिन रिंग जिसको हम जनरली बोलते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिंग्स इन पॉलीमर, जनरली
आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी लेस हो जाता है, राइट। वैरेज अगर आपको ऐसे लीनियर वाले स्ट्रक्चर दिखे, मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऐसे लीनियरली अरेंज्ड है एक ही डायरेक्शन में, ऑल्सो इट कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, तो उस केस में आपका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलता है, राइट। अगर कोई भी चीज़ में आपको फिनिलिन रिंग ऐसे रिंग दिखे, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट लेस फ्लेक्सिबल मटेरियल। वैरेज अगर ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर दिखे तो यू आर गोइंग टू गेट more flexible material, right? Yes, yes. Understood? Yeah. So give me 2 to 3 minutes and I will come back. Right, right. Take some water. Okay, okay. So these are the effect. Hello, somebody switch on his mic. Can you please switch it off? Hello. Yeah. So these are the effect of any side chain molecules that has been present in the polymer, right? Also, second point is your polarity. So, what do you mean by polarity? Where, uh, what do you understand by polarity? Where there are atoms which can be uh, either mostly it will attract to each other, right? Attract matlab
एक एंड और दूसरे एंड पे मोस्टली अट्रैक्ट होते हैं, राइट, दैट इज नोन एज पोलरिटी, राइट। अगर वो एटम्स में मोर पोलर नेचर रहा, सो दैट क्या होगा उससे आपका, if your polymer is considered to be polar, right? So I will give you an example, like polyamides, polyesters, PET and all. PET में आपका PET हो सकता है, PBT हो सकता है या PTT हो सकता है, हाँ। So these polymer are PET, PBT, PTT, polyamides, and these polymer are considered to be polar, right? So due to its polar nature, आपका क्या होता है, जब फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। इफ द पोलर नेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, दैट मीन्स योर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, राइट। सो if you are getting your intermolecular forces are getting increased, that means your polymer is becoming more hard, it is going to behave more hard in the terms, right? So that is the concept of polarity, right? अगर कोई भी पॉलीमर में पोलर नेचर से, दैट मीन्स आपका जो फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वो इंक्रीज होता है, जिसके वजह से आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है पॉलीमर चेन में, वो आपका डिक्रीज हो जाता है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पॉलीमर चेन इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, राइट। अंडरस्टूड? हेलो। जी सर। So which are the polar polymer I have said? Which are the polar polymer that I have discussed? Like which polymer are considered to be polar and which are the non-polar polymer? Can you tell me? In condensation polymer, polyamide, polyesters are considered to be polar, right? अगर addition polymer में जाओगे, what which are the polar polymers? And what is the effect of polarity? Can you tell me whether polypropylene is a polar or non-polar polymer? Polyethylene is non-polar polymer. Okay. Why is it so? Why polystyrene is considered to be polar and polyethylene is not considered to be polar? Whether polystyrene is polar or non-polar, or in between that, polar and non-polar nature. Polystyrene. Polystyrene is non-polar. Polystyrene is also non-polar, right? Yeah. So how you define polarity? मतलब क्या होता है कि आप किसको polar polymer बोलते हो? Have you you are, whether you are working with some professionals and or what? You are working with some industry, right? Which type of polymer that you are using there? Uh, Sir, I am not working in this eh, polymer industry, but I am working with PET materials, but I don't know in detail about that. you are working with PET materials, Yes, polyethylene. Okay, yes, okay. ethylene terephthalate, but I don't know much in So detail because I'm just doing the thermoforming for the PET. That's it. okay, okay. So you are doing thermoforming for the PET and you are producing these disposables for Yes, correct, tech, correct, electronics and all, flexible electronics and all that you are correct, producing. correct. Okay, okay. So PET is considered to be polar because due to presence of this bond, right? Linkage, ester linkage is considered to be polar. That's Hmm. why PET is considered to be polar, right? Yeah, Polyamides are linkage to be considered to be, NH linkage is considered to be polar. That's why it is considered to be, द मटेरियल इज कंसिडर्ड टू बी पोलर। वो जो लिंकेज की वजह से ही आपका पोलरिटी कोई भी पॉलीमर में इम्पैक्ट होता है, राइट, hmm. राइट। तो हम एक जो है मोस्टली कैसे पोलरिटी आप डिस्कस करते हो कि जैसे जैसे आप रिलेटिवली डिस्कस करते हो, राइट। पॉलीस्टाइरीन इज रिलेटिवली पोलर एज कंपेयर टू पॉलीप्रोपिलीन, राइट। सिमिलरली पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और एसीटेट आर मोर पोलर देन पॉलीस्टाइरीन, राइट। वो एक रिलेटिव स्केल है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, राइट। मेजरमेंट तो वो कैसे करते हो, वेदर सम मटेरियल जिसका आपका पेंटेबिलिटी अच्छा है एंड ऑल लाइक दैट, सो इट शुड बी ए व्हाट इन नेचर, कोई भी मटेरियल जिसमें आप पेंट करते हो, इफ यू आर गिविंग द पेंटिंग ऑफ समथिंग, राइट, If it is पेंटेबिलिटी, bending, non-polar, पेंटेबिलिटी इज कंसीडर्ड टू बी नॉन पोलर और पोलर समथिंग। non-polar. पेंटेबिलिटी इज कंसीडर्ड टू बी नॉन पोलर जिसके ऊपर आप पेंटिंग करते हो,
Hello. So now polar material will not bend, right? So PVC here comes under polar, and I don't think so. PVC can bend easily. Okay. So polar material you cannot consider to be bent, right? Yes, yes, So that's why the bendability is less in PVC. You're telling. yeah, correct. और अगर आप पॉलीस्टाइरिन बोलते हो, whether you are taking, if you are taking polystyrene, whether it is a polar material or non-polar material. Polystyrene is non-polar. Okay. Then pentability, how it, so that's why it is getting good pentability or what, or whether it is the something other factors are there. Polystyrene, I think it is more stronger than PVC. Stronger is a like what you can say, the concept of polarity is depend on the one part is on the performance properties, second part is in the flexibility, right? So Hmm. when you talk about performance properties means what, where you will get something, performance means आप उसमें कुछ चीज कर रहे हो like paintability, printing and all, so Yeah, that is your performance property, right? Inherent properties क्या होता है, जिसके वजह से आपका मटेरियल का जो है अ, क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, राइट? पोलरिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दीज आर डिफरेंट, दीज आर परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज, राइट? So my concept is polarity. Poles means what? जहाँ पे आपका एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है, राइट? राइट, yes, राइट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी पोलर, राइट? सो ऑल्सो देयर आर सम सेकेंडरी फोर्स, राइट, जिसके वजह से भी आपको, आप ऐसे डिफाइन करते हो कि यस इट इज ए पोलर मटेरियल, राइट? दैट मीन्स इट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी पोलर, लाइक ऐसे बहुत ही ज्यादा पोलर मटेरियल है, बट बहुत ज्यादा पोलर होने के लिए आपको उसके ऊपर चार्ज या आयन ऐसे फॉर्मेशन करना पड़ेगा, राइट? राइट, hmm. लेकिन रिलेटिवली पोलर एंड रिलेटिवली नॉन पोलर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? Yes, Relative, yes, as compared to this and so that's why I'm telling that it is relatively polar, right? Polyamide, polyesters are relatively polar than polyethylene, polypropylene and like that. You understood what I'm trying to yes, say? yes, yes. Okay, so uh, due to the structure, so what are the changes that so you've understood, right? Once is the size and shape of the polymer chain, then is the polarity, right? then structure, what are the structures of polymers, right? जिससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्टली व्हाट यू कैन से यूज पार्ट, राइट? वो आपको जिनको केमिस्ट्री नहीं समझता, इट्स वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज नॉट बिकॉज यू हैव नॉट इनटू केमिस्ट्री। सो स्ट्रक्चर वाइज आप कैसे इम्पार्ट करते हो कि पॉलीमर क्या होगा, राइट? If we are considering a homopolymer, whether it is going to give you better strength or what, why, what is the difference between homopolymer and copolymer? Can you tell me what is the difference between homopolymer and copolymer? You have read it, right? किसको होमोपॉलीमर बोलते हैं और किसको कोपॉलीमर बोलते हैं, आपने पढ़ा रहेगा ना, एक सिमिलर Homo, टाइप। हाँ, homopolymer is will have repeated monomers actually. the So it will have, single monomer has been repeated thousand yes, times, then it is known as homopolymer, right? yeah, correct. अगर दो मोनोमर है, वो अल्टरनेटिव फैशन या रैंडम फैशन या ब्लॉक्स में रिपीट हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज कोपॉलीमर, राइट? Hmm. Yeah, दैट इज द होल आइडिया। yeah, अल्टरनेटिव में रहेगा तो एक के बाद एक रिपीट होगा, अगर ब्लॉक में रहेगा तो देयर विल बी 10 ब्लॉक्स, 15 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स, राइट? इट ऑल आर स्टैटिस्टिकल, मीन्स कैसे भी 5 ब्लॉक्स में भी हो सकता है, 10 ब्लॉक्स में भी हो सकता है, 15 ब्लॉक्स में भी हो सकता है, तो वो एक 15 blocks of A, then 15 blocks of B, ऐसे होगा तो then it is also a copolymer and that copolymer is known as block copolymer। अगर सिमिलर A and B repeated फैशन में रिपीट हो रहे हैं, one A, one B, then again A, then B, then A, so these are known as to alternative copolymers, so these are known as alternative copolymers,
where A, B, and this fashion has been repeated continuously, and these are considered to be block copolymer, right? There Hmm. is a block, Hmm. right? Block of A, block of B, then block of C. You can easily see from the like density of that these images, right? आपको दिख रहा है Yeah. कि अलग है, right? And these are considered to be homopolymer, right? Hmm. So either there are homopolymer, there are no types. Homopolymer means it is a homopolymer, right? If it is a, then it is, if a polymer is ethylene, then homopolymer of ethylene is polyethylene, right? But there are some copolymer of polyethylenes also. Which is the copolymer of polyethylenes that you are using if you use uh, you have, I all discussed many times, like LLDP, right? Linear low density polyethylene, right? So LLDP is a copolymer of polyethylene. Always remember, it is not a homopolymer. It is a Okay. branch copolymer of polyethylene. It is ethylene is polymerized with octene or butene. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्टीन ब्यूटेन के साथ जब कोपोलिमराइज होता है तो उसमें आपको मेन चेन पे तो कोपोलिमराइज नहीं होगा, क्योंकि वो साइड चेन में आपको साइड चेन दिख रहा है, राइट? उसमें आपको ब्रांच दिखता है इथिलीन में, पॉलीइथिलीन में, एलडीपी या एलएलडी, सॉरी एलएलडीपी में, एलडीपी तो नहीं। तो जो ब्रांच दिखता है, दैट ब्रांच इज कैन बी convert that branch structure is generally considered to be a different molecules of the from that main structure, right? That's why it is a copolymer of octene, right? तो मोस्टली जो LLDP होता है, linear low density polyethylene, it is a copolymer of polyethylene, right? Similarly आप polypropylene आप यूज करते हो, everybody is using polypropylene, right? It's a very commonly known material, right? जिसको आप Yeah. पीपी बोलते हो, राइट? सो इन पीपी देयर आर डिफरेंट कोपॉलीमर ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, राइट? राइट? why you do why you do copolymerization that is another part. Why you do want to do copolymerization? Can you just simplify me why I need a copolymer? क्योंकि To आप have better material properties. ओके, सो जनरली क्या होता है जो कोपोलीमराइजेशन उसी के लिए करते हो, जैसे पॉलीप्रोपिलीन, सो इट इज मोस्टली कंसीडर्ड टू बी ए गुड मीडियम रेंज स्ट्रेंथ मटेरियल, राइट? हैविंग ए गुड मीडियम रेंज ऑफ मॉडुलस एंड ऑल, राइट? whereas it lacks in impact properties, right? Where it is lack is in its impact properties, so it generally a impact properties में lack करता है, right? That's why you add certain amount of ऑक्टीन ब्यूटीन एंड वॉट एवर पेंटीन एंड ऑल, राइट? तो आप उसको कोपोलिमराइज करते हो, मतलब आप जब पॉलीमराइज करते हो उसके चेन्स के बीच में ये जो लिंकेज है ये सब ऐड करते जाते हो, राइट? तो वो जो लिंकेज ऐड होता है दैट मीन्स इथिलीन के साथ ये लिंकेज ऐड है, एंड ऑल्सो यू आर डिफाइनिंग द वट एवर द परसेंटेज ऑफ दैट लिंकेज। कोपोलीमर का लिंकेज है तो कितना परसेंटेज में मैंने कोपोलीमर उसमें ऐड किया, 10%, 15%, 20%। द मोर यू ऐड द कोपोलीमर लिंकेजेस, राइट, मोस्टली 10 to 20% के बीच में लोग ऐड करते हैं, तो मोर विल बी द एनहांसमेंट इन इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज, राइट? अगर कोई भी पॉलीमर का इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है तो मोर द you are adding going to add this rubbery type of unit to the polypropylene chain, the more will be the increment in its impact properties. That's why you require a copolymerization, right? Right? Yeah. तो कोपोलीमराइजेशन का आइडिया ही यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है पॉलीमर का वो इम्पार्ट करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इम्पार्ट करोगे? by adding some type of rubber, right? By reacting with certain type of rubber, तो rubber के साथ react कर रहे हो, that means you are producing a copolymer, right? So copolymerization का concept दो है वो यही है। homopolymerization का concept ये है कि आप एक सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यूसली ऐड करते जाते हो एंड यू आर प्रोड्यूसिंग अ होमोपॉलीमर। अगर दो मॉलिक्यूल्स को आप अल्टरनेटिंग फैशन या रैंडम फैशन या ब्लॉक में ऐड कर रहे हो, देन यू आर प्रोड्यूसिंग ए कोपॉलीमर, राइट? Also there are also different type of copolymer like statistical copolymer, then graft copolymer, star copolymer, right? ये सब जो copolymer are different. What is the example of star copolymer, graft copolymer? आपको पता है? Which are the material you are commonly very commonly using that polymer which is a graft copolymer? Have you heard of HIPS, high impact polystyrene? Yes, sir. I impact polish. Yes. राइट? HIPS का भी शीट को आप थर्मोफॉर्म करते रहोगे, राइट? Yes.
right? So HIPS is nothing but a graft copolymer of polystyrene and butadiene rubber, Hmm. right? That's why it is known as a HIPS. So butadiene rubber को आप graft करते हो polystyrene के chain में, और स्टाइरिन ब्यूटाडाइन वेदर इट इज ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, दोनों टाइप के जो रबर आते हैं ना, उसको आप मोस्टली पॉलीस्टाइरिन के साथ ग्राफ्ट करते हो, राइट? In that grafting reaction you are producing a graft copolymer, right? That's why HIPS is considered to be a graft copolymer. Understood? Yeah. Right. So these are the part of internal plasticization, these are the part of copolymerization, right? So by doing copolymerization you are going to improve the flexibility of any polymer, right? जनरली कोपोलीमराइजेशन इसलिए करते हैं कि आपका जो फ्लेक्सिबिलिटीज है पॉलीमर का वो इम्पार्ट हो जाए, राइट? other than copolymerization there are plasticization का मतलब you are adding some type of external agent, right? What do you mean by plasticizer का मतलब ही यही है कि एक external liquid है, right? एक्सटर्नल लिक्विड है जो आप कंटिन्यूसली पॉलीमर में ऐड कर जो आप पॉलीमर में ऐड करते हो, तो वो क्या करता है, आप पॉलीमर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है, राइट? So have you heard of the term plasticizer? What are the plasticizer? Where you have heard the term of plasticizer? No, sir, I never heard this word actually. This is the first time I'm hearing जो this. लोग Yeah. पीवीसी में काम करते हैं, those who are working in PVC, they are generally they have heard of this term plasticizer, right? What do you mean by plasticizer? It is nothing but a liquid, high boiling point liquid, right? जो आप मोस्टली पॉलीमर में ऐड करते हो टू इम्प्रूव इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, एंड मोस्टली पॉलीविनाइल क्लोराइड में ही प्लास्टिसाइजर का ऐड होता है, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड इज कंसिडर्ड टू बी a brittle material, right? It is considered to be a brittle material. That's why you are adding certain type of plasticizer to impart its flexibility, right? That's why the plasticizer the terms has come from that, right? So plasticization का मतलब ही यही है कि when you are adding any foreign substance like outer liquid and any property enhancement additive, right, that can impact flexibility in your polymer, so that terms is known as plasticizer, right? So what do you mean by plasticizer? When you somebody told me that that is basically a liquid which you are going to add into a polymer to improve its flexibility, right? Right. So generally plasticizer is added in polyvinyl chloride to impart the flexibility to PVC, right? So if you see in PVC, uh, generally you see in PVC, so what you see a rigid PVC pipe and you see a flexible PVC pipe, right? अब जनरली रिजिड पीवीसी पाइप देखते हो, राइट? जो स्वेज Yes. पाइप एचडब्ल्यू आर पाइप बोलते हैं जिसको, जो ग्रे कलर का पाइप आता है, आई थिंक यू आर सीइंग इट, राइट? एचडब्ल्यू आर पाइप जो ग्रे कलर के पाइप्स आते हैं, दैट इज ए Yes. पीवीसी Yes. पाइप, Yes. Yes. राइट? ऑल्सो यू आर गेटिंग दिस ड्रिपिंग पाइप्स जो फ्लेक्सिबल है पीवीसी के, जो आप गार्डनिंग में यूज करते हो, राइट? Hmm. Yeah. So these are both different, right? One PVC is very hard and one Hmm. PVC is very soft, right? How is it so? Right? Because that soft polymer or soft pipe has a plasticizer which you are going to add into that PVC to make it soft, right? When you are adding the plasticizer at a larger amount like 40 phr, that means parts per 100. Parts per 100 means when you are adding 40 gram in 100 gram, then that is considered to be parts per 100, that is 40 phr, right? So the terms of phr is nothing but when you are adding something in 100, that is converted into parts per 100. So that's why the phr terms has come from there, right? So when you are adding certain amount of plasticizer and good plasticizers in PVC to improve its flexibility, so then you are going to produce a plasticized PVC pipe, right? Which are mostly used in gardening and all, and flexible pouches, right? Not only in gardening, right? There are also some modification to PVC by adding plasticizer and elastomers also, where you are getting the blood pouches, right? आप देखते हो ना, तो फ्लेक्सिबल एक तो आपका पॉलीयूरेथेन का बनता है, राइट? जो आपको मेडिकल एप्लीकेशन में आप देखते हो, राइट? Yeah. ट्रांसपेरेंट पाउच, देयर आर आल्सो ट्रांसपेरेंट पीवीसी पाउचेस जिसमें आपको पीवीसी को डिफरेंट मटेरियल के साथ ब्लेंड कर किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिसाइजर
टू क्रिएट सच पाउचेस, यूरिन पाउचेस, ये जो पाउचेस होता है ना जिससे आपको देते हैं वो सेलाइन पाउचेस, ये सब डिफरेंट मटेरियल से बनता है। और ऐसा नहीं कि एक सिंगल मटेरियल हो सकता है, इट मे बी कॉम्पोजिशन ऑफ 2 or 3 मटेरियल, राइट। तो आप डिफरेंट ब्लेंड्स करके, ब्लेंडिंग जो है, जो टर्म्स मैंने इधर लिखा कि व्हाट इज ब्लेंडिंग, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। सो by adding different additives or elastomers also you are improving the flexibility of that particular material. So that's why it is known as plasticization, right? So the plasticization is generally done in the presence of plasticizer. Also you can add, do the copolymerization also by adding certain type of rubber and copolymerizing it. Also you can do by blending of certain elastomers also in polymers, right? What are the elastomers? What do you understand by what is elastomers and all? Have you heard of term elastomers? No. Yes, the materials with elastic properties, right? Yes, the material with elastic properties are considered to be elastomers, right? So you have heard of Engage and all, Vistamax. These are the elastomer terms, मतलब these are the grade name of different elastomers, right? Hmm. तो डाव का जैसे आपका एनगेज है, सिमिलरली आपका एक्जन मोबिल का विस्टा मैक्स है, देन एसके ग्लोबल करके कंपनी है जिसका आप टाफेमर भी यूज करते हो। दीज आर द टाइप ऑफ इलास्टोमर्स, दे आर मार्केटली अवेलेबल इन द मार्केट। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑल्सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स, राइट। वो भी ऑल्सो देयर आर सर्टन इलास्टोमर लाइक एसबीआर, sorry, SBS, styrene butadiene styrene, right, or styrene ethylene butadiene styrene, SEBS. So these are the different type of elastomer that we are generally using in the uh, what you can say, to improve the impact, to improve the flexibility or impart the flexibility in different polymer, right। इलास्टोमर का काम ही यही है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करे, सिमिलर एज लाइक प्लास्टिसाइजर। तो दीज आर, अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना है, इट इज नॉट ऑलवेज प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर भी यूज कर सकते हो। कोई कोई केस में लोग इलास्टोमर्स यूज करते हैं, कोई कोई केस में लोग different, also simply you are, some of the people are also using epoxidized rubber, natural rubber, right। ये सब चीजें यूज करके आप फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। बट मोस्ट commonly used terms are two, commonly used material are two, generate two types, one is plasticizer and one is elastomers। ये दोनों चीजें बहुत यूज होता है, राइट। अगर कोई चीज में आपको दूसरा फेज नहीं चाहिए, सिंपल वही पॉलीमर का बना हुआ चाहिए, तो आप प्लास्टिसाइजर यूज करते हो। अगर कोई दूसरा मटेरियल आपको यूज करना है, मतलब आपको उससे डालने से या यूज करने से कुछ इशू नहीं है, तो आप इलास्टोमर यूज कर सकते हो। क्योंकि इलास्टोमर आप जब ब्लेंड करते हो कोई दूसरे पॉलीमर के साथ, राइट, तो फिर दो अलग अलग, एक फेज के अंदर दूसरा फेज ऐसे डिस्पर्स होकर रहता है, सो दैट यू आर गेटिंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी, राइट। ऑल्सो यू अंडरस्टूड द व्हाट इज द compatibility, right, whether this phase is compatible with this polymer or not, this polymer is compatible with this polymer or not. Based on that also you choose the elastomers, right, whether my material is compatible with SBR or SBS, SEBS, किसके साथ compatible है, तो उसके बेसिस पे आपको इलास्टोमर चूज करना रहता है, राइट। सो these are the concept where we can improve the flexibility of any polymer, right, by using certain types of additive. It might be a plasticizer, or it might be a elastomer, whatever, right, understood? Yeah. So the overall conclusion is something like that. When there is a polymer structure, if it is a you have a polymer structure, right? So how to overcome its rigidity of the structure, right? So for overcoming that rigidity, you require certain amount of energy, right? That means you certain require a certain barrier to be overcome, right? And that barrier potential can be overcome through, in the presence of what, by adding certain additives and all, by improving the temperature। अगर आप टेम्परेचर भी improve ज़्यादा करते हो, टीजी के ऊपर जाते हो, also you are removing the barrier potential, right, by increasing the free volume can also be increased by increasing the temperature, or by adding certain amount of plasticizer and all, right, by changing the conformation means आपका जो पॉलीमर का रोटेशन होता है, बॉन्ड का रोटेशन होता है, उसको आप चेंज कर दोगे या आप उसको अल्टर कर दोगे, उससे भी आपका बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट, जिसके वजह से आपका मटेरियल का जो फ्लेक्सिबिलिटीज है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा, राइट। ये सब डिफरेंट आइडिया है टू इम्प्रूव द
flexibility of any polymer. So you understood this topic, why it is important, and what is the structure and what are the properties of any polymer. Yes. Yes, sir. Or if you have any question, you can ask me. uh, you understood about this linear structure, what is the linear structure, what is branch structure, the basic of that. You understood what is linear structure, what is branch structure? Yes, sir. Okay, so you understood the what are the general properties in polymer. What are the properties like physical, mechanical, thermal, electrical? जनरली आप कंसीडर ये करके चलो कि इलेक्ट्रिकल जो परफॉर्मेंस प्रॉपर्टी है, परफॉर्मेंस में देखते हो, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, जो कि आप मटेरियल में मोस्टली देखते हो, राइट? सो मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, व्हाट इज, आगे आप पढ़ोगे लेकिन व्हाट, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज। सर कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? कन्फर्मेशन मतलब वो होते हैं जब आप एक पॉलीमर का एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, राइट? आप स्ट्रक्चर को जैसे 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 आप हीट एनर्जी देते हो, वो स्ट्रक्चर का कोई कैपेबिलिटी देता है कि रोटेट करने का, राइट? वो जो रोटेशन होता है बॉन्ड्स के, राइट, बॉन्ड का जो रोटेशन होता है, जिससे आपका जो साइड ग्रुप्स होते हैं ना, जो मैंने आपको जैसे डिफरेंट ग्रुप्स दिखाया, जैसे आ, ये मैंने आपको कहाँ दिखाया, एक मिनट, लाइक दिस, हाँ, ये जो ग्रुप्स हैं, तो ये आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का उन्होंने दिखाया, राइट? सिमिलरली ये जो ग्रुप्स है, जैसे जैसे वो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द कैसे होते हैं, रोटेट होते रहते हैं, राइट? तो वो चेंज होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी। तो ये मोस्टली कहाँ पे होता है, जैसे आपका पॉलीमर का जो एंड रहता है, चेन एंड रहता है ना, चेन एंड समझ रहे हैं आप? सपोज एक धागा लिया और उसका दो एंड आप समझ लो कि दोनों साइड में दो एंड है, राइट? यू आर अंडरस्टैंडिंग मी? इफ देयर आर two one single thread, and in the last portion and this portion there are two groups which are rotating in the presence of, जैसे जैसे आपका पॉली हीट एनर्जी बढ़ता है तो वो रोटेट होते हैं, राइट? इट इज कंसिडर्ड टू बी रोटेटिंग, जन जिसको हम वाइब्रेशनल मूवमेंट बोलते हैं, या ऐसे भी रोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीमर, राइट? जैसे जैसे आपका पॉलीमर का चेन रोटेट होता है तो वो मॉलिक्यूल्स के जो साइड चेन ग्रुप्स हैं, राइट, जैसे इस इधर आपका मोस्टली, सॉरी, ये जैसे आपका सी एस थ्री ग्रुप है, सो ये ग्रुप जनरली आपका रोटेट होते हैं, तो इस ये रोटेशन का आप क्या बोलते हो, कॉन्फर्मेशन बोलते हो। तो दीज आर द कॉन्फर्मेशन जो आप मान के चलते हो कि ये पॉलीमर में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनर्जी बैरियर। अगर एनर्जी बैरियर आपका ओवरकम कर जाए तो आपका पॉलीमर रोटेट होना चालू होता है, बॉन्ड रोटेशन होना चालू होता है, इसलिए आपका कॉन्फर्मेशन चेंज होता रहता है। दीज आर कॉन्सेप्ट, राइट? You are understanding me, right? These are the concept where you are deriving, yes, that due to the presence of increase in energy, so that आपका पॉलीमर का मोबिलिटी बढ़ जाता है, तो आपका कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है, राइट? सिमिलरली और एक टर्म है जो इधर मैंने प्लेस नहीं किया, दैट इज कॉन्फ़िगरेशनल टर्म, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशनल टर्म? आप कॉन्फ़िगरेशनल टर्म किसको बोलते हो आप, वेर यू, कॉन्फ़िगरेशन टर्म वो होता है जैसे आपका कॉन्फर्मेशन में कैसे रोटेट होते हैं, राइट? सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन टर्म होता है कि अरेंजमेंट ऑफ योर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, राइट? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है आपका, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, कैन यू सी दिस स्लाइड? यू सीइंग दिस Yes, स्लाइड, sir. राइट? Okay, so this is the R group. R group means this is the substituent group, right? These substituent group are similarly arranged in a same direction, so that means it is in a similar configuration, right? मतलब ये आइसोटैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दीज आर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज जो आप एक बार आपने कर लिया, लाइक आपने सपोज मैंने केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ, राइट? तो मैं कोई पॉलीमर बना रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस अप्लाई करने रहते हैं। मतलब मुझे उस टाइम पे ये जो डिसाइड करना रहता है कि ये जो साइड चेन ग्रुप है ये कहाँ पे रोटेट होगा और किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, राइट? दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन।
राइट। अगर ये चीज अल्टरनेटिव फैशन में यूज हो रहा है, देन इट इज ए ऑल्सो ए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इसलिए उसके बेसिस पे आप ना आपका मोस्टली दीज आर टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपका पॉलीमर का मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका अरेंजमेंट व्हाइल डूइंग द रिएक्शन, राइट। एट ए पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन में जो आप पॉलीमर ग्रुप्स को जुड़ते जाते हो, राइट, तो उस टाइम पे आप कॉन्फ़िगरेशनल चेंज करते हो कि मेरा जो पॉलीमर है उसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, राइट। ये वंस इट इज बिन डन, एक बार वो आपने चेक कर लिया, ये कर लिया, तो आप फर्दर उसको जब तक आप बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते या वो कॉन्फ़िगर उसको पॉलीमर चेन का जो बॉन्ड है उसको आप ब्रेक नहीं करते तब तक वो आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते, राइट। कॉन्फ़िगरेशन अनटिल एंड अनटिल अनलेस आप कोई पॉलीमर का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं करते तो आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन कॉन्फर्मेशन चेंज कर सकते हैं। कॉन्फर्मेशन क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि वो एक एनर्जी बैरियर के ऊपर रोटेट होता रहता है, राइट। विच आर कंसिडर टू बी ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कि आप हाँ ये हो सकता है, बट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका मोस्टली पॉलीमर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि आप वो जो केमिकली आप जो पॉलीमर को बनाते हो तो आप वैसे कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हो, राइट। वेदर इट इज ए आइसोटैटिक, वेदर इट इज ए सिंटोटैटिक कॉन्फ़िगरेशन और अटैटिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपने पढ़ा रहेगा सिस और ट्रांस, those are from chemical background, they I think they have heard this term cis configuration, trans configuration. हेलो। जी सर। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में पढ़ा रहेगा, जो कि केमिकल टर्म्स में यूज होता है, सिस स्ट्रक्चर, ट्रांस स्ट्रक्चर। ये जो चीज है ये सब मोस्टली आप जब सिंथेसाइज करते हो ना पॉलीमर, इस टाइम पे आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है। जबकि कॉन्फर्मेशन क्या है, वो आप हाइपोथेटिकली ये मान के चलते हो कि हाँ मेरा पॉलीमर बॉन्ड ऐसे रोटेट होता रहेगा, लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल ए रियलिस्टिक अप्रोच। वो जब साइंटिस्ट जब डिजाइन करते हैं तो कॉन्फर्मेशन के हिसाब से डिजाइन करते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल चेंज जो है वो आप कैटलिस्ट से बनता है। कोई भी पॉलीमर हो गया ना तो आइसोटैटिक पॉलीप्रोपिलीन बनता है, राइट, और एटैटिक पॉलीप्रोपिलीन बनता है, क्योंकि आप वो रिएक्शन के टाइम वैसे टाइप के पॉलीप्रोपिलीन आप बनाते हो, वो वैसे टाइप के कैटलिस्ट यूज करते हो जिससे वो टाइप के पॉलीप्रोपिलीन बने, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस। कॉन्फर्मेशन जो है वो थोड़ा आप ये बन के चलते हो कि हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप डिफरेंट जनरली कॉन्फ़िगरेशन का आप सेट करते हो, राइट। अंडरस्टूड? जी सर। ओके, सो ओके, okay, so the next is considered to be the flexibility. Then second part is mostly to crystallinity. What do you mean by crystallinity? Can you somebody else explain me what is crystals? It is the systematic arrangement of. Okay, so as I said you earlier, the earlier discussion, it is a systematic arrangement where you get a crystals, right? The polymer are mostly considered to be semi-crystalline, right? Or it may be a amorphous material, right? So what is the effect of that crystals, right? Not like different like metals में कैसा होता है कि उसमें प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन पॉलीमर में कैसा है, there is crystal structure but there is no perfect crystal structure, right? कोई ऐसे परफेक्टली क्रिस्टल्स नहीं रहते, क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहते हैं, अलाइंड होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बट वो एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। लेकिन हम उसके बेसिस पे लेकिन क्रिस्टलिटी डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द एंथैल्पी, हाउ द एंथैल्पी, व्हाट आर द एंथैल्पी वैल्यूज, and what are the melting point, right? What is the degree of crystallinity of polymer, right? How this crystallinity helps in increasing the mechanical properties of polymer, right? How the crystallinity is going to affect your Tg temperature, and how the crystallinity is going to help in building the strength in a polymer, right? So these are the effect of different crystallinity, right? So what do you mean by crystallinity? So अगर आप crystallinity कोई material कोई चीज का crystallinity बढ़ रहा है, that means what? Hello, am I audible? Hello. Yes, sir.
Yes, Yes, sir. you're Okay. audible. So what do you mean by, so you understand what is crystallinity, right? जो कोई भी अरेंजमेंट जो कि एक रेगुलर फैशन में होता है तो आप उसको क्रिस्टल, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप क्रिस्टल्स बोलते हो, राइट? वो अरेंजमेंट को ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हो, राइट? So these are the polymer crystals. So there is no polymer crystals which are perfectly aligned, right? But there are certain crystallinity in the polymer that we are going to measure. And why we are going to measure the crystallinity? Because from crystallinity you can derive different data, like how is the going to the how you can predict different data. So how your polymer is going to, how your properties of your polymer going to be, right? कैसे आपका पॉलीमर का प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, राइट? सो दैट इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ क्रिस्टलिटी, कि क्रिस्टलिटी आप क्यों जानना चाहते हैं, व्हाई वी वांट टू मेजर द क्रिस्टलिटी, राइट? गॉट इट? Yes, yes, yes. So just if it is a very crystals, right? So highly ordered microscopic structure, what is a crystal, right? So high packing density, mechanically hard but brittle, low solubility. If it's a crystal structure, then the solubility will be less, right? Is the polymer are perfectly aligned. So for aligning polymer and for dissolving it, the solubility will going to get reduced, right? The higher the crystal structure, the higher will be the melting point, right? दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो पैकिंग डेंसिटी ज़्यादा होगा, मैकेनिकली वो जो मटेरियल है वो हार्ड एंड ब्रिटल होगा, राइट? उसका जो पॉलीमर, वो जो पॉलीमर से और मटेरियल है, पॉलीमरिक मटेरियल है, उसका सॉल्युबिलिटी लेस होगा, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो जनरली हाई होगा, राइट? सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्रिस्टलिटी? So why you require a crystallinity to be calculated? Can you tell me? To find the properties of materials. Okay, Or, so to find the properties, right? If it is a crystalline polymer, semi-crystalline polymer, so what? So why required a semi-crystalline? So अगर similar kind of दो एक polymer है polypropylene, which is 60-70% crystalline, 50-60% crystalline, and same polypropylene is there which is 40% crystalline. So which polypropylene has a better properties and what property will be better? the higher number of crystalline properties, uh, polymer will have like more strength and brittle. Okay, so the higher the So crystallinity, the structure is predicted to be more strengthened and brittle than the lower crystalline. Same yes, material, same yes, molecules. If it is getting a higher crystalline order, then it will, the property will be mechanical strength, melting properties, melting temperature, right? Their heat deflection temperature, right? Their VSP, Vickers separating point, will be higher as compared to a low crystalline polypropylene, right? yeah, Right. So better example is if you are getting a grade of polypropylene copolymer and a polypropylene homopolymer. If you see that, have you seen a data sheet of polypropylene copolymer and polypropylene homopolymer? If you really see that, and yes, right, you have seen it. So Yes. if it is so, you see the copolymer has a lesser properties than homopolymer, right? That means homopolymer has a better crystallinity than copolymer, right? hmm, yeah, Right. So homopolymer has a better crystallinity than copolymer because copolymer, as I said you earlier, is mostly containing rubbery, like some what you can say, some units that has been attached to improve its impact properties or impact amorphousness in the polymer, in the polypropylene, right? That's why yeah, you are getting a suppressed property as compared to the homopolymer, right? So that is the idea of crystallinity. If it is the, if your polymer is morely crystalline, then it should give you a good property, right? In similar kind of material than less crystalline polymer, right? So that's why it is or it is always good, or always what you can say, advisable to measure the percentage of crystallinity, right? In your industry you generally measure the percentage of crystallinity through one equipment that is known as DSC, that is differential scanning calorimetry, right? जो कि terms बहुत सारा जगह पे आपको यूज होगा, क्योंकि whenever you go to thermal properties, the basic equipment is DSC, where you measure all the thermal properties of any polymer, right? You generally measure TG, you measure TM, and you measure crystallization temperature, right? This is the yes, basic equipment to measure the thermal properties of your polymer,
राइट। सो सिमिलरली अगर आपका पॉलीमर ज़्यादा क्रिस्टलाइन है तो ये ज़्यादा एनर्जी लेता है मेल्ट होने के लिए, इसके क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए इट टेक्स मोर एनर्जी, राइट। If it is Yes. a more so that means your enthalpy value of that polymer is going to get increased, right। अगर जितना आपका स्ट्रक्चरल क्रिस्टलिटी बढ़ेगा उसका आपका उतना एनर्जी लगेगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आपको ब्रेक करने के लिए, राइट। तो इसलिए वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए उतना एनर्जी लगेगा, दैट मीन्स दैट पॉलीमर हैज ए हायर एंथैल्पी वैल्यू, राइट। तो उसको आप फिर फर्दर जो टेम्परेचर लगेगा आपको यूज करने के लिए, व्हाट यू कैन से प्रोसेस करने के लिए एंड ऑल, it will be little bit higher than amorphous polypropylene, right। Similarly in the properties wise, अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल है, क्रिस्टलाइन पॉलीप्रोपिलीन है, आइसोटैटिक पॉलीप्रोपिलीन है जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, तो उसका एचडीटी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है, या बीएसपी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑल्सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंप्रूव द सरफेस हार्डनेस ऑफ योर पॉलीमर, राइट। जो हार्डनेस चेक करते हो ना आप रॉकवेल में, हार्डनेस रॉकवेल या सोरे सोडी जो भी आप यूज करते हो, राइट। सो डी इज प्रिफरेबली वुड फॉर सेमी क्रिस्टलाइन प्लास्टिक, एंड रॉकवेल का आर स्केल में आप देखते हो, राइट। these type of hardness properties are also going to get improved due to the presence of any crystalline structure, right। Understood? Yeah. Okay, so generally you understood what is enthalpy, that energy that binds together any system, right। जो आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो एनर्जी आपका बाइंड करके रख रहा है तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी एंथैल्पी, व्हेयरएज कोई भी डिसरप्टेड स्ट्रक्चर है मेल्ट फॉर्म में, राइट। अगर डिसओरिएंटेड स्ट्रक्चर है जो एमोर्फस नेचर है जिसमें, या आपका पॉलीमर मेल्ट हो जाता है तो उसमें भी डिसरप्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, तो उसको आप जनरली एंट्रोपी बोलते हो, राइट। Hmm. Yeah. राइट। डिग्री ऑफ रेंडमनेस मतलब आप कोई अमरफोस है तो उसमें रेंडमनेस ज्यादा है, राइट। कैसे भी अरेंज हुए हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स इट इज मोस्टली रेंडम, राइट। दैट इज कंसिडर्ड टू बी एंट्रोपी। पर जो जो जगह एरिया पे परफेक्टली अलाइंड है क्रिस्टल्स, उस दैट क्रिस्टल टू आप ब्रेक करने के लिए दैट इज कंसिडर्ड टू बी द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का आप क्या बोलते हो, जो आप परफेक्टली अलाइंड, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए आपको एंथैल्पी लगेगा, राइट। हायर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हायर विल बी द एंथैल्पी, व्हेयरएज higher the crystal structure, lower will be the entropy value, right। So there is a scientific term. You just remember the most the crystal structure is, more will be the better thermal stability of a polymer, right? More will be the melting point, right? And more energy you require to break that polymer. More energy in the form of enthalpy, right? You require to break the crystal structure. Understood? Yeah. Okay, so again, when you got how you going to get improve your crystal structure, right? The first case is that, right? How you're going to get improve the crystal structure, right? If you are going to arrange all the uh, polymer chain in a similar order, right? Similar order means what? Is a perfectly aligned order, right? कैसे अरेंज करोगे perfectly aligned order में कोई भी polymer chains को, right? वो तब अरेंज कर सकते हो जब वो पॉलीमर का चेन जो है वो मोस्टली कंसिडर्ड टू बी मेड ऑफ व्हाट, देयर विल बी नो सच बल्कियर ग्रुप्स दैट हैज बीन प्रेजेंट इन द पॉलीमर चेन, राइट। कोई ऐसा बल्की ग्रुप्स नहीं होगा, और मोस्टली व्हाट यू कैन से द पॉलीमर चेन आर मोस्टली इन what is the exact term what you can say, linear polymer, right। is mostly the linear polymer, there will be no bulkier group, so that polymer को आपको arrange करने के लिए easy होगा, right, to get a better crystal structure। जैसे कि the perfect example is that uh, HDP, high density polyethylene, is considered to be the most linear polymer, right। And again also I am telling the high density polyethylene, if you remember I have also told you the high density polyethylene is considered to be the commercially available most linear polymer, right। So why it is so? Because it only contains carbon and hydrogen, and it does not have any bulky groups, right? That's why it is a linear polymer. So similarly, if you get polypropylene, it is considered to be linear, but it is a smaller, bulkier group in the side chain, like alkyl group, like CH3। उसके साइड चेन में CH3 लगा रहता है ग्रुप जो है, तो उसके वजह से वो
little bit less linear as compared to polypropylene. So a little bit less linear as compared to high density polyethylene, right? So polypropylene has a polyethylene, high density polyethylene has a most linear structure, then polypropylene has a less linear structure as compared to high density polyethylene. Similarly you shift to polystyrene, right? स्टाइरिन में आपको कैसा है, you have a cyclic ring, right? जो कि आप substituent ring या ring structure जो कि साइड चेन में है, तो वो मोस्टली कंसिडर टू बी अमोर्फस, राइट? सो माय कॉन्सेप्ट इज दैट हाउ द क्रिस्टलिटी इज गेटिंग चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? अगर आप एक पॉलीमर का एक स्ट्रक्चर है जिसका आप लीनियर है, अगेन आपका और एक पॉलीमर है जिसके साइड ग्रुप में आपका मोस्टली अल्काइल ग्रुप है, और एक स्ट्रक्चर है जिसमें साइड चेन में आपका मोस्टली bulkier groups है, right? Bulkier groups in the form of benzene ring and something like that, right? तो उसका क्रिस्टलिटी सबसे कम है, दैट मीन दैट इज कंप्लीटली कंसिडर्ड टू बी अमोर्फस मटेरियल, राइट? तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे क्रिस्टलिटी वेरी करता है, राइट? तो पॉल so the more the linear the structure is, the more will be the crystallinity also, right? You understood? ना आपने समझा नहीं? So आप कह रहे हैं more the linear structure, more the crystallinity. The more the linear structure of your polymer chain, like polyethylene, right? It is the most linear polymer, right? High density polyethylene. तो आप पॉलीथिलीन का क्रिस्टलिटी पॉलीस्टाइरीन से ज्यादा है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ज्यादा लीनियर है और उसमें कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप या साइड चेन ग्रुप नहीं है। जैसे पॉलीस्टाइरीन में आपका एक बेंजीन रिंग लगा रहता है पॉलीमर चेन में, राइट? जो कि क्रिस्टलिटी को इफेक्ट करता है, राइट? द मोर द लीनियर मीन्स more the linear, that means you are going to arrange your polymer chain in a perfect order, right? जितना linear chain रहेगा उतना perfect order में आप polymer chain को अरेंज कर सकते हो, दैट्स वाई उसका क्रिस्टलिटी जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू bulkier ring और साइड चेन ग्रुप और नॉन लीनियर पॉलीमर, लाइक इवन ऑल्सो कंसिडर द पॉलीइथिलीन में और दूसरा पॉलीइथिलीन लाइक एलडीपी एलएलडीपी, उसका भी साइड चेन चेन से, राइट? उसके वजह से उसका अमorphous नेचर बढ़ जाता है, राइट? the more the linear structure will be, the more will be the crystallinity, right? So जो perfectly crystalline material है जिसका सबसे ज्यादा crystallinity है, that is considered to be और highest achievable commercially available polymer is HDP, जिसका आप crystallinity 70-80% तक आप क्रिस्टलिटी अचीव कर सकते हो। ऑल्सो यू इफ यू आप उसको एक पर्टिकुलर रेट पे कूल भी कर रहे हो तो उसका भी क्रिस्टलिटी बहुत अच्छे से आप अचीव कर सकते हो, राइट? So that's why it is the concept of when the linear material is there, the crystallinity will be higher as compared to material polymer with a bulkier group or side chain groups. Understood? But sir HDP brittle तो नहीं होता है. हाँ, एचडीपी ब्रिटिल तो नहीं होता। क्यों ब्रिटिल नहीं होता, उसका भी कारण है, राइट? एवरी कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड इन एवरी सिस्टम, राइट? वो क्रिस्टलिटी ज्यादा है लेकिन ब्रिटिल इसलिए नहीं होता बिकॉज इट इज मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रिटिलनेस इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द क्रिस्टलिटी, ये डिपेंड करता है क्रिस्टलिटी पे, लेकिन आप कब एचडीपी का ब्रिटिलनेस देखोगे? जैसे एचडीपी का, अगर कमर्शियली एचडीपी को सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल से आप कंपेयर करो, लाइक एचडीपी एलडीपी एलएलडीपी, व्हिच इज द मोस्ट ब्रिटल पॉलीमर बिटवीन थ्री? HDP. ऑब्वियसली मैं इसलिए बोलता हूँ वेन एवर यू आर कंपेयरिंग, कंपेयर विद द सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीमर्स, राइट? पॉलीइथिलीन को एचडीपी एलडीपी एलएलडीपी के साथ ही कंपेयर करो क्योंकि उसका केमिकल जो नेचर है, जो केमिकल्स उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो दूसरे पॉलीस्टाइरीन में नहीं है। पॉलीस्टाइरीन में आपका बेंजीन रिंग है इसलिए वो ज्यादा ब्रिटिल है, राइट? अगर उसका टीजीबी उसका एचडीपी का कितना लो है, विद उसका क्रिस्टलिटी ज्यादा रहेगा बट उसका टीजीबी तो बहुत कम है, मींस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज इन माइनस नेगेटिव -90 -80 में उसका टीजी है, राइट? So every time you cannot apply every concept everywhere, but just remember when you are comparing the similar kind of polymers, right? Similar type of material, similar family of materials. तो वो polyethylene में when you are comparing polyethylene family, you compare HDP with LDP and LLDP, also MDP, medium density polyethylene, तो आपको समझ जाएगा
क्योंकि वो सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड है, सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीमर है, जिसका क्रिस्टलेंट के बेसिस पे ही आप उसको हार्ड, सॉफ्ट और ये सब बोल सकते हो, राइट? फ्लेक्सिबल और समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड? जी सर। Right. So next lecture tomorrow or Monday. What time? Mostly, I don't know. Somebody is there from your side. Someone there from IPI. त्यावेळेला 250-300 रुपये आणखी साईड इन्कम मध्ये मोठं होतं. Sorry. Hello. Yes, sir. Sir, Yeah. tomorrow is there fine, or I can take on Monday? Whichever you convenient. If it is Okay. tomorrow, you can schedule. We can start the classes. You can. It is not possible. Then we can shift it in one day also. Monday, Tuesday, Whichever you Wednesday. can. Monday, Tuesday, Wednesday, I'll take then. Accordingly, you have to convey to your colleagues. Yeah, no, I will be taking all 3 lectures. Okay. So Monday, Tuesday, Wednesday. So I'll be Okay, sir. taking. Okay. As per your schedule, sir. Okay, okay. Yeah. Okay, because tomorrow I wish to conduct, but Yeah. I've got, as I am doing other research and all, so I have some activity. Okay. Okay, then we will meet on Monday, sir. Okay. Okay. Also, that's it for today. Then we'll see you on Monday. All right. Good night. ओके, थैंक यू Thank you सर। so much, sir. Good night. सर प्लीज इसका पीडीएफ तो नहीं मिलता है सर. हाँ, I will share. Don't worry. I will certainly find it and share.